Is the tonsillitis contagious? Unfortunately, the answer is yes. You are highly infectious for the first 24 to 48 hours. So the thing is that Assalamu alaikum, I am Dr. Kanza, and today in this video I am going to talk on a very interesting topic which is tonsillitis. Now let me tell you what is tonsillitis. Tonsils क्या होते हैं? They are like the oval shaped tissue buds जो कि हमारे back of tongue में situated है and back of throat में they are like lying over there, and when they get inflamed either by the virus which is a common flu, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और बाय द बैक्टीरिया जो कि स्ट्रेप्टोजेंस है, जो कि हमारे मुंह के अंदर वैसे भी ओरल फ्लोरा में नेचुरल वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, एंड व्हेन दैट बैक्टीरिया अफेक्ट्स योर टॉन्सिल्स और एनी वायरस अफेक्ट योर टॉन्सिल्स, तो फिर वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, एंड आपको खाने में मुश्किल होती है और swallowing में even the saliva, even the hard food, you feel pain in your throat and you get the fever, you get tired, you get low, depressed. These all are signs and symptoms of the tonsillitis, the inflamed tonsillitis. So today in this video I'm actually going to answer those very common asked questions by our public related to this tonsillitis, क्योंकि बच्चों में भी होता है and adults में भी होता है. Answer those common questions जो कि public पूछती है and they are not even aware of this disease. And then I'm also going to tell you that how you can overcome this inflamed tonsillitis condition at your home by following the simple home remedies and can relieve your those signs and symptoms of acute tonsillitis at home. So let me tell you that tonsillitis दो तरह का होता है, एक acute and one is chronic. Now acute उसके नाम से ही लग रहा है कि that acute वो होगा अचानक sudden and then it is going to resolve within 7 to 10 days. 7 से 10 दिनों में वो रिकवर हो जाएगा and you will get fine with the home remedies and with the antibiotics and with the proper medicine, वो बिल्कुल रिकवर हो जाएगा. लेकिन जब क्रॉनिक हो जाता है that shows कि that अब वो 10 दिन के अंदर रिजॉल्व नहीं हो रहा and it is proceeding further, तो वो chronic tonsillitis हो जाएगा. So here I'm going to tell you that how you can diagnose that it is chronic tonsillitis कि या तो पिछले 3 सालों में आपके हर साल 3 दफ़ा गला खराब रहा हो, या पिछले 2 सालों में हर साल 5 दफ़ा आपको टॉन्सिलाइटिस हुआ हो, या पिछले प्रीवियस ईयर में आपको 7 दफ़ा टॉन्सिलाइटिस हो चुका हो, देन यू कैन डायग्नोज सेल्फ डायग्नोज योरसेल्फ दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम chronic tonsillitis and now you want and you need to step up for some proper management, for some proper surgical management for this tonsillitis, chronic tonsillitis, because it is actually affecting your life overall, your work, you are unable to perform your work with energy and overall health, like being sick sucks. So फिर हम उस तरफ चले जाएंगे. Now jumping on the commonly asked questions related to the tonsillitis. First question is that either tonsillitis is contagious. So the answer is yes. Hell yes, it is contagious. Like अगर आपको अभी sign and symptoms नहीं है tonsillitis की and एक दो दिन पहले you are like not having any sign symptoms and still you are like affected, तो आप जो है वो वायरस वो बैक्टीरिया ट्रांसफर कर सकते हैं टू द अदर पर्सन. हाउ? बाय किसिंग, by coughing, by sneezing, by the droplets, you can transfer that infection to the other person. So avoid kissing when you are infected, have acute tonsillitis. Now the other question is that कि आप कब infection free हो जाते हैं या आप कब contagious नहीं रहते. It's just like that after 3 days of antibiotic intake आप contagious नहीं रहते, but still on a safer side आप जो है फिर भी एहतियात करें कि दैट एक तो ये किसिंग, स्नीजिंग, कफिंग ये चीज़ें अवॉइड करें एंड मोर ओवर आपके जो जूठे बर्तन हैं यूज यूटेंसिल्स वो कोई और यूज़ ना करे, आपको जूठा पानी कोई यूज़ ना करे. सो ट्राई टू प्रिवेंट योर सराउंडिंग सो दैट दे कैन नॉट कैच द वायरस और द बैक्टीरिया फ्रॉम यू. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने. Then the other question which is being asked is that can tonsillitis can go away on its own? Yes, it can within 4 to 10 days. लेकिन अगर आपको लगे कि 3-4 दिन बाद आपकी कंडीशन बेहतर नहीं हो रही, then definitely you need to opt for proper medicine and for a proper doctor consultation. Then it is also asked that how serious is the tonsillitis? Now let me tell you that if you left it untreated, then obviously it will complicate. It can convert into peritonsillar abscess
एंड वो क्या है, वो एक फ्लूइड फिल्ड हमारा सब्सटेंस होती है विद द बैक्टीरिया, और फिर वो जो कंडीशन है वो और भी सिवियर कर देती है, थ्रॉट एक बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप कुछ खा नहीं सकते, अगर आप कुछ सोलो करते हैं तो आपको पेन होता है हर टाइम. एंड लेट मी टेल यू कि दैट इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट देयर आर पीपल who are suffering from bacterial tonsillitis. They take time to recover, they take time to overcome their all signs and symptoms. If you are getting the medication for your bacterial tonsillitis and you are not overcoming and you are not getting rid of your signs and symptoms, like you still have the throat ache, just be patient and be calm. You are going to get fine at the end after months or weeks. Now jumping on the other question, that how you can treat the tonsillitis at home. It's very easy. Now what you need to do, you need to take a lot of rest. आपने रेस्ट करना है. Then you need to do the saline gargles, वो जितना ज़्यादा आप regular intervals पे कर सकते हैं, that is so good for your throat. You need to consume warm drinks like bone broth हो गया, soups हो गए, ऐसे आपने जो warm drinks हैं और soups हैं वो consume करने हैं. It will actually relieve the inflammation in your throat, जो कि inflamed tonsils हैं. Then even the humidifiers, and moreover you can take steam. Then take the over the counter painkillers जैसे acetaminophen हो गया, Tylenol हो गया, ये पेन किलर्स लें जो कि आपकी इस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करें. देन अवॉइड स्मोकिंग. जो लोग स्मोकिंग करते हैं, व्हेन दे आर सफरिंग फ्रॉम टॉन्सिलाइटिस, प्लीज अवॉइड स्मोकिंग बिकॉज इट विल इरिटेट योर टॉन्सिल्स एंड इट विल डिले द हीलिंग एंड इट विल मेक द इन्फेक्शन मोर वर्स. स्टे हाइड्रेटेड. अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है. फ्लूइड इनटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए. इट विल एक्चुअली हील योर दैट एक्टिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स. One of the other questions जो पूछा जाता है, that what are the foods which you need to avoid when you are suffering from tonsillitis. So let me tell you that when you are infected or when you have infected tonsils, तो आपके tonsils बहुत swollen हुए होते हैं, painful हुए होते हैं, even आपके lymph nodes भी swollen हुए होते हैं. तो what you need to do, you need to avoid the hard dry foods, जिसके अंदर सीरियल्स भी आ जाते हैं, ड्राई टोस्ट भी आ जाता है. ऐसी कोई भी सख्त चीज़ जो कि निगलने में मुश्किल हो एंड दे विल इरिटेट एंड दे विल टच योर इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स, वो आपने अवॉइड करनी है. आपने कोशिश करना है कि दैट आप सॉफ्ट फूड का इंटेक करें ताकि आपके टॉन्सिल्स, इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स इरिटेट ना हो. अदर क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, दैट कैन स्ट्रेस cause tonsillitis. So let me tell you that streptococcus, which is a bacteria which exists in our oral flora already, but if you are immunocompromised, if you have low immunity levels, then yes, स्ट्रेस इज अ फैक्टर जो कि ट्रिगर कर सकता है आपके टॉन्सिलाइटिस को, एंड इट विल एक्चुअली डिक्रीज द इम्यूनिटी लेवल. इम्यून रिस्पॉन्स जो है आपका डिक्रीज होता है ऑब्वियसली ड्यूरिंग द स्ट्रेस, एंड इट कैन एक्चुअली बी अ ट्रिगर फैक्टर फॉर योर टॉन्सिलाइटिस. So the people who are suffering from the chronic tonsillitis, this is a factor which you need to avoid, which is stress. So these were the commonly asked questions, and I already told you that how you can overcome the acute tonsillitis condition at your home, किस तरह से आप उसको overcome कर सकते हैं उस condition को, and what actual is tonsillitis and होता क्या, क्योंकि बच्चों में बहुत common है, adults में भी बहुत common है. So it's better कि आप उसका बचपन से ही इस condition का ध्यान रखें ताकि वो worse ना हो, वो complicate ना करे, and never left tonsillitis untreated because then it can complicate and then it can turn into the peritonsillar abscess, जो कि highly painful है, and a lot of other complications can occur due to the chronic tonsillitis. So it's better to take this thing serious and to overcome it on time. So hope you like this video, and if you like this video, give this video a thumbs up and to subscribe my channel. दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़. This could be good for me. Lately I was